Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Physics Class 9th, Chapter number 3, Lecture number 5. And today, the topics of discussion are friction, types of friction, rolling friction, advantages and disadvantages of friction, and methods of reducing the friction. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसाइरम एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द गो. डियर स्टूडेंट्स, टुडे our topic of discussion is friction. So the question arises, what is the friction? डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन में जो ऑपोजिशन आती है मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हुए एक ऐसी फोर्स भी प्रेजेंट होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट को मज़ीद मूव करने से रोकती है. उसी को नेम दिया जाता है, दैट इज़ द फ्रिक्शन. लाइक डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो कि एक हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है. आप उस ऑब्जेक्ट को इस बॉक्स को जो है मूव कराना जब चाहते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इज आल्सो अ फोर्स that opposes its motion, that it will be called as the force of friction. Dear students, now I'll read the definition of friction. Friction is a force that opposes motion between the two surfaces touching together. Dear students, फ्रिक्शन के होने के लिए एक लाजमी शर्त ये भी है कि जिन दो सरफेसेस की वजह से या एक ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हैं तो उसकी मोशन में फ्रिक्शन इसलिए आ रही होती है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के साथ इन कांटेक्ट होता है. मींस ऑब्जेक्ट का किसी और सरफेस को टच करना या इन कांटेक्ट होना भी ज़रूरी है. Dear students, now the question arises, why the friction opposes the motion? ऐसा क्यों है कि हमेशा फ्रिक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कराते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को. डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि एक बॉक्स मौजूद है जो कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर मौजूद है और उसको एक पर्सन जो है उसके ऊपर एक पुशिंग फोर्स लगा रहा है, उसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव कर सके. सो ड्यू टू द देयर विल आल्सो बी a force present that will oppose its motion, that will be actually called as the force of friction. But why the friction opposes the motion? Dear students, अब आपको इसी स्क्रीन के ऊपर जो नीचे फिगर बनी हुई है वो दिखाई दे रही है कि वो बॉक्स जिसको आप स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं और वो जिस हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखेंगे देन यू विल सी द पिट्स एंड बम्प्स आर प्रेजेंट. डियर स्टूडेंट्स, दीज पिट्स एंड बम्प्स एक्चुअली अपोजेस द मोशन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पिट्स एंड बम्प्स हैं ये ऑलमोस्ट हर सरफेस के अंदर मौजूद होते हैं. आपको दूर से दिखने वाली चीज़ जो बहुत स्मूथ सिल्की दिखाई देती है, अगर आप उसको बहुत करीब जाके या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे पिट्स और बम्प्स लाजमी मौजूद होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज पिट्स एंड बम्प्स आर एक्चुअली the cause of opposing the motion. Now dear students, now we will see how many types of friction are there. There are basically 3 types of friction. One is the static friction, second is the sliding friction, and the third is the rolling friction. Dear students, now we will firstly discuss what is the static friction.
डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर मौजूद हो, स्टैटिक का मीनिंग रेस्ट होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर मौजूद होगा, इट्स मीन देयर इज नो मोशन इन दैट ऑब्जेक्ट। आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई मोशन नहीं हो रही, ना ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ना बैकवर्ड, ना अपवर्ड, ना डाउनवर्ड। इट्स मीन this object has a friction that will be called as the static friction. Now, dear students, now we will discuss what is a sliding friction. Dear students, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर स्लाइड कराते हैं, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कराते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से हटता है, डिस्प्लेस होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन मौजूद होगी दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Sliding friction will be present due to the sliding motion of that object. Dear students, now we will discuss what is the rolling friction. Rolling friction किसे कहा जाता है? ऐसी टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो एक स्पेसिफिक रोल्ड शेप के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट होता है, लाइक बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई भी राउंड शेप बॉडी या कोई सिलेंडर ले लें, तो ऐसी शेप के जब ऑब्जेक्ट्स की मोशन में ऑपोजिशन आ रही होती है इन देयर मोशन, दैट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द रोलिंग फ्रिक्शन. It's mean we can shortly say that due to the rolling motion of the object, the friction that is present in the motion of that object, it will be actually called as the rolling friction. Dear students, rolling friction is always less than the sliding friction, and sliding friction is always less than the static friction. Now, dear students, we will understand some important parameters for the derivation which is on your book. In order to understand the relationship between the Fs, mu and the weight of the body, we should firstly know what is the Fs, mu and mg. So firstly we will discuss what is Fs. Dear students, Fs is actually the force of limiting friction. वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो, डैट विल बी कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय द Fs and it always depend upon the normal reaction force. Dear students, what is the coefficient of friction? Coefficient of friction is actually the ratio between the force of the limiting friction and the normal reaction force. It is called as the coefficient of friction. Dear students, now I'll read the definitions of these two important parameters. First is the force of limiting friction. The maximum value of the friction is known as the force of limiting friction. It is denoted by the Fs and it always depends upon the normal reaction force. Now I'll read the definition of coefficient of friction. The ratio between the force of limiting friction and the normal reaction force is called the coefficient of friction. Dear students, आपकी बुक के ऊपर इस फ्रिक्शन वाले टॉपिक में एक छोटी सी डेरिवेशन दी गई है जो कि रिलेशनशिप शो कर रही है बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द बॉडी. डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है. दैट इज एक्चुअली द Fs and the coefficient of friction is denoted by the mu, and you all know the weight of the body is denoted by the W, which is equal to the mg. डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन में हमने अभी पढ़ा है कि जब आप फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर के साथ डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. म्यू इज इक्वल टू Fs ओवर आर.
Now, dear students, we will have to find out the value of Fs. Fs will remain there, and R, which is divided at the right side, it will get multiplied on the left side of the equation. So we will get Fs is equal to mu r, which is our first equation. Dear students, we all know what is the value of r. R is actually the normal reaction force, and the value of r is always equal to the weight, and weight equal to the mg. Dear students, now by putting the value of r as mg, we will get the final form of the equation 1, which is Fs is equal to mu mg. This equation actually shows the relationship between the force of limiting friction, coefficient of friction, and the weight of the body. Dear students, if you have the values of coefficient of friction and mass of the body, then you can get or you can calculate the value of the force of the limiting friction. डियर स्टूडेंट्स, इस छोटी सी डेरिवेशन की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, डैट इज़ वेरी इजी। और इसमें आने वाले तमाम पैरामीटर्स को मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है कि ये क्या होते हैं। सो आपको इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, इनको किन से डिनोट किया जाता है, आपको ओवरऑल हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द रोलिंग फ्रिक्शन के रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। रोलिंग फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन जो रोलिंग बॉडी की वजह से पाई जाती है उसे कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का डियर स्टूडेंट्स एक और नेम भी है, डैट इज कॉल्ड द रोलिंग रेजिस्टेंस। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल ये है कि एक बॉल जो कि या जो व्हील है जब वो ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, एज यू ऑल नो देयर शेप इज राउंड, सो दे ऑल पोजेस द रोलिंग फ्रिक्शन. Now I'll read the definition of this topic, that is the force resisting the motion of rolling body on a surface is known as the rolling friction or rolling resistance. Rolling of the ball or wheel on the ground is an example of rolling friction. In this type of friction, there is a restriction on the body's movement as only one side of the body is in contact with the surface. Dear students, now we will discuss the advantages and disadvantages of the friction. Dear students, as we all know, friction plays a very important role in our daily life. Friction जो है, dear students, without the friction हम कॉपी के ऊपर लिख भी नहीं सकते अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड द पेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो आप किसी भी ग्राउंड के ऊपर स्मूथली मूव नहीं कर सकते, यू विल ऑलवेज गेट स्लिप्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो आप किसी भी नेल को वॉल या वुड में जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। Dear students, now I'll read the advantages of friction. There are some advantages given there. You will have to memorize these all advantages. The first is it becomes difficult to walk on a slippery road due to the low friction. When we move on ice, it becomes difficult to walk due to the low friction of ice. Second is we cannot fix nail in the wood or the wall if there is no friction. It is the friction which holds the nail. Third is a horse cannot pull a cart unless friction furnishes him a secure foothold. डियर स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस के साथ साथ अब हम डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे कि फ्रिक्शन के मौजूद होने से कौन कौन से नुकसानात होते हैं। अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस में मेन डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि अगर
मशीन्स में उनकी मशीन्स जब चल रही होती हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, और वही हीट जो है बहुत सी यूज़फुल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देती है। और फ्रिक्शन ही की वजह से जो मशीन्स हैं उनकी मोशन में नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसका भी बाइस बनती है। उसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो तो वो जो है ऑब्जेक्ट कभी भी स्मूथली मूव नहीं कर सकता, रुक जाता है ड्यू टू ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शन। नाउ आई विल रीड द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. Despite the fact that the friction is very important in our life, it has also some disadvantages. Like the main disadvantage of the friction is that it produces heat in various parts of the machine. In this way, some useful energy is wasted as heat energy. Second is, due to the friction, we have to exert more power in machines. Third is, it opposes the motion. Fourth is, due to the friction, noise is also produced in machines. Fifth is, due to the motion, engines of automobile consume more fuel, which is a money loss. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक को देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ कि आप सरफेसेस जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स की मोशन कराना चाहते हैं उन्हें स्मूथ बनाना स्टार्ट कर दें. आप किसी भी सरफेस को जितना स्मूथ बनाएंगे वहाँ पे पिट्स और बम्प्स कम होंगे, और वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो भी कम होगी, और ऑब्जेक्ट जो है बहुत फास्टली मूव करेगा. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप जो मशीन्स वगैरह हैं उनकी अगर आप मोशन को स्मूथ करना चाहते हैं तो आप उन्हें लुब्रिकेट करना स्टार्ट कर दें, उन्हें ऑयलिंग करनी उनकी स्टार्ट कर दें. इसके अलावा ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे व्हीकल्स जिनको आप चाहते हैं कि बहुत फास्टली मूव करें कम टाइम में, तो आप उनकी शेप जो नॉर्मल शेप है उस डिज़ाइनिंग की बजाय उनकी स्ट्रीमलाइन शेप कर दें, तो वो ऑब्जेक्ट, वो व्हीकल्स बहुत स्पीडीली मूव करेंगे. उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस की वैल्यू कम करते जाएंगे, तो जितनी कम फोर्सेस किसी भी सरफेस के ऊपर एक्ट करेंगी उतनी ही कम फ्रिक्शन होगी. उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेसेस उनको भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें. Dear students, now I'll read these all methods which I have discussed. First is, make the surfaces smoother. Rough surfaces produce more friction and smooth surfaces reduce the friction. Second is, lubrication is another way to make a surface smoother. Third is, make the object more streamlined. Fourth is, reduce the forces acting on the surfaces. And the last is, reduce the contact between the surfaces. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then kindly do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening me.